जय श्री कृष्ण बेटा। बेटा असी कर रहे सी 13 चैप्टर 10th ICSE सैक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, यदि 13.13A 13B जी मैं अपलोड कर चुकी हाँ। 13B के थोड़े जे लास्ट सम रहिंदे सी वो मैं हुण करवा रही हूँ तुहानूं। ठीक है, सम नंबर 11 336y x7 56 आर द वर्ड्स ऑफ पैलोग्राम। ठीक है, पहला असी पैलोग्राम बना लांगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ पैलोग्राम A B C and D. The vertices are parallelogram the vertices ना serial which लाने हैं 336y 336y x756 x756 ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है बच्चे, असी अगे भी कर चुके हैं पैरेललोग्राम। वी नो सानू पता है meet in a parallelogram midpoint of parallelogram ABCD, midpoint of AC is equal to midpoint of BD। AC the midpoint क्या आएंगे 3 plus x over 2 ते BD दे 3 plus 7 over 2। AC the midpoint x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 equal to हुन BD दे लवांगे x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2। ठीक है, हुन दोनों विच इक्वल दा साइन है, एरो पा के दोनों नूं इक्वल ले लांगे 3 plus x over 2 is equal to 11 by 2 and 3 plus 7 by 2 that is 10 by 2। 10 by 2 is equal to 6 plus y over 2। कैलकुलेशन तुसी अपने हिसाब ना कर सकते हो। कई बच्चे इत्थे 10 by 2 5 ना कट भी कर देंगे, कई इस तरह ईजी समझणगे 2 ना 2 कट हो गया। 3 plus x is equal to 11, x is equal to 11 minus 3, x is equal to 8। ठीक है, और 10 is equal to 6 plus y, 10 minus 6 is equal to y। y दा पॉइंट आ गया 4। सानू उन्होंने यह क्या सी कि फाइंड द वर्ड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज 6 and 4 जी बेटा, 8 and 4। ओके जी, नाउ गो थ्रू फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। हम असी 12 क्वेश्चन करांगे। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है साडे को। टू वर्सेस ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। हुण सानू एक ट्रायंगल गिवन है, पहला मैं डायग्राम बना लेंगी। डायग्राम ना बच्चे थोड़ा समझना ईजी हो जाता है, वैसे भी ज्योमेट्री जी है विद डायग्राम दैट इज ईजी वन। ए बी सी, ठीक है। A 6 4, B is -2 and 2, -2 and 2, 6 and 4, x is not given, take it x and y। G is given, that is the centroid, 3 4, 3 and 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। we know centroid is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। ठीक है, हम सेंट्रॉइड की गिवन है 3 and 4। पहला पॉइंट है 6, दूसरा -2 plus x over 3। ठीक है, जे तुसी कंफ्यूज हो रहे हो ए बी पॉइंट है x3 y3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी पॉइंट नू ये तुहाडी मर्जी बच्चे, जिस तरह तुहानू कंफर्टेबल है, पर ठीक होना चाहिए तुहाडा। ओके, ये x वाला आ गया, y वाला आ गया, 4 plus 2 plus y3 over 3। ठीक है, उन्हें सॉल्व कर लो थोड़ा जिहा। 3 and 4, this is 6 minus 2 plus x3, this is 6 plus y3 over 3। ठीक, this is 3 and 4, this is 4 plus x3 over 3, this is 6 plus y3 over 3।
ठीक है, एरो डालांगे, एरो मीन्स विच इंप्लाइज एक्स कोफिशिएंट जेड़ा एक्स दे इक्वल कर देवांगे क्योंकि विच इक्वल का निशान है। 3 is equal to 4 plus x3 over 3. 9 is equal to 4 plus x3. 9 minus 4 is equal to x3. The 5 is equal to x3. 4 is equal to 6 plus y3 over 3. 12 is equal to 6 plus y3. 12 minus 6 is equal to y3. 6 is equal to y3. ठीक है, साडा पॉइंट क्या आ गया? सी पॉइंट की सी असी लिया x3 ਤੇ y3 3 मैं ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ क्योंकि ਇਹਨੂੰ x1 y1 ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ x2 y2 ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇ c ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ that is 5 and 6 this is the answer okay सेंट्रॉइड ਦਿੱਤਾ ਹੈ सेंट्रॉइड ਦਾ फार्मूला अप्लाई करता तो you get the answer ठीक जी now go through for the next question that is question number 13 जी बेटा question number 13 the coordinate of the vertices of the triangles are फिर vertices of triangle है triangle draw करांगे A B C 4 minus 3 4 minus 3 minus 5 and 2 x and y x and y if the centroid of the triangle is origin now centroid is given that is origin then we have to prove x is 1 y is 1 ठीक है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ सेंट्रॉइड ਦਾ फार्मूला लगा ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ मैं सीधा ही लगा देनी है सेंट्रॉइड की है 0 is equal to x1 plus x2 4 plus minus 5 plus x over 3 y1 plus y2 plus y over 3 this is a sada centroid according to question ठीक this is 0 and 0 this is minus 1 plus x over 3 this is minus 1 plus y over 3 by equality of points क्योंकि विच इक्वल का निशान है 0 is equal to minus 1 plus x over 3 and 0 is equal to minus 1 plus y over 3 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा that is 0 is equal to minus 1 plus x 0 plus 1 is equal to x 1 is equal to x this is okay 0 into 3 is equal to minus 1 plus y 0 is equal to minus 1 plus y 0 plus 1 is equal to y 1 is equal to y this is hence proved उन्हें क्या सी कि जे सेंट्रॉइड 0 0 लईए तो साडी xy दी वैल्यू की आंदी है 1 1 आंदी है yes hence proved if we are taking centroid 0 0 then we are getting the value of xy is ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ क्वेश्चन नंबर 13 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 and 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ y ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1 and 1 ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਅਗਲਾ क्वेश्चन ਕਿਤੇ ट्रायंगल ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ जी क्वेश्चन नंबर 14 if the coordinate of the midpoint of the side of triangle is 1 2 0 1 2 minus 1 this is D E and F midpoint सानू दिते हुए हैं 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 इधर आएगा बच्चे D E then F is 2 minus 1 2 minus 1 तो उन्हें सानू क्या if the centroid of the triangle is coordinate of the centroid of the triangle ਅਸੀਂ centroid ਲੱਭਣਾ ਹੈ बेटा एक गल याद रखियो जो ट्रायंगल ਦਾ सेंट्रॉइड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ सेंट्रॉइड सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ सेंट्रॉइड ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ डी ई एफ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ
centroid of triangle DEF जी की दसिया तुहानू मैं x1 this is x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y1 upon 3 this is 3 upon 3 this and this will cancel 2 by 3 this is 3 over 3 cancel this is 1 and 2 by 3 this is सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला वही है चाहे वो मिड पॉइंट है चाहे वो कॉर्नर्स हैं ठीक है एड द ऑल एंड गेट योर आंसर ठीक है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 नाउ जी बेटा इस तरह के क्वेश्चन तो MCQ वगैरह च आएंगे ठीक है नेक्स्ट इज 15 A, B, C are the vertices. Find the length of median. वैसे ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ and centroid. एक triangle given है सानू. Okay. A, B, C. A point is 5 minus 1. 5 minus 1. B point is minus 3 minus 2. C point is minus 1 and 8. These are the points. If the iconic asanus find the centroid, to find the length of median through the A. A तो असी median करना है. M D ले लें. D जड़ा हुंदा ना हमेशा जो असी median करना है सानू mid point चाहिए. मैं आगे भी तो दस चुकी हूँ. Sum number 15 for median वास्ते असी मिड पॉइंट कटांगे मिड पॉइंट ऑफ BC मिड पॉइंट क्या आएगा x1 plus x2 minus 3 plus minus 1 over 2 y1 plus y2 minus 2 plus 8 over 2 that is minus 3 minus 1 over 2, 6 over 2. This is minus 4 over 2, or this and this cancel 3. This and this cancel minus 2 and 3. This is the midpoint. हुणे साडे कोल आ गया midpoint किदा BC दा. Okay, BC दा midpoint आ गया minus 2 and 3. हुण सानू point आ गया BC दा that is D. ये D point निकलिया साडा. ठीक है हुण सानू चाहिदा मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन बेटा लेंथ ऑफ मीडियन दैट इज AD ते डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 ठीक है A पॉइंट साडे कोल की है मैं इत्थे लिख लानी थोड़ा इजी हो जाएगा A इज 5 and minus 1 ते D इज minus 2 and 3 x2 minus x1 y2 minus y1 whole square. This is minus 2 minus 5 minus 7. This is 3 plus 1. This is 49 plus 4 square. You get 49 plus 16. ठीक है मैं पहला भी दस चुकी लेंथ नू असी मोड ना डिनोट करते हैं 65 ठीक है दिस इज ये साड़ी आ गई लेंथ अंडर रूट 65 बेटा ये फैक्टर बनने 13 एंड 5 दोनों चो कुछ भी कॉमन नहीं आना इतने कर देना ठीक है दिस इज 65 यूनिट्स दिस इज द लेंथ होर उन्हें सानू की क्या सी सेंट्रॉइड तो पता ही है सेंट्रॉइड ऑफ ABC that is x1 plus x2 plus x3 5 plus minus 3 plus minus 1 upon 3 y1 minus 1 minus 2 plus 8 upon 3 this is 5 सेंट्रॉइड नु वैसे जी ना डिनोट कर दे जे लिखना है तो लिख सकते हो over 3 minus 1 minus 2 plus 8 over 3 this is 5 minus 4
over 3 minus 3 plus 8 over 3. ठीक है, this is beta 1 by 3, this is 5 by 3, this is the centroid. Okay, ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ last question of this exercise, this chapter and this video. We are going to do that. वैसे पहला तो मैंने लगा कि सम ईजी है, तुसी कर लोगे। फिर मैंने लगा कि चलो कर भी लोगे तो कम से कम प्रेजेंटेशन चेक कर लोगे या आंसर्स टैली कर लोगे। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट joining A 2 3 B minus 3 5 segment, that means there is a line A point and B. A point is 2 3 minus 3 and 5, 2 and 3. Now extended through each end, दोनों end तो इन्हों बढ़ाना है, extend मतलब increase करना है, and a length equal to the original length. Original length कितनी AB, कहता है इन्हों इधरों भी बढ़ाओ, उन्ना ही बढ़ाना है जिन्नी है दी original length है, ते इस साइड तो। ठीक है, extend the line AB to right side up to Q as AB is equal to BQ. Okay, ठीक है। Now and extend the line AB to left side up to P as AB is equal to BQ तो AP, AB is equal to AP। ठीक है, मतलब ये सारिया लेंथ्स की ने इक्वल, जे लेंथ इक्वल है तो रेशो भी इक्वल होएगी, जे रेशो इक्वल है तो मतलब मिड पॉइंट होएगा। ठीक है, नाउ PA is equal to AB is equal to BQ, सारिया इक्वल है, which implies A is midpoint of PB. Now A is the midpoint of these two, इन्हां दोनों का midpoint A होएगा। If P नू मैं x1 ते y1 ले ला, then की आएगा, इन्हों मैं x1 ते y1 ले लिया। ठीक है, तो मेरे को की आएगा x1 plus minus 3 over 2 y1 plus 5 over 2 is equal to 2 and 3। ठीक है, क्योंकि मैं A नू के लिया इन्हां दोनों का मिड पॉइंट, ते जे इन्हां दोनों नू ऐड किया जाएगा 2 ना डिवाइड करिए, इन्हां दोनों नू ऐड करके 2 ना डिवाइड करिए तो मिड पॉइंट आ जाएगा। दैट इज x1 minus 3 over 2 is equal to 2, the y1 plus 5 over 2 is equal to 3। x1 is equal to minus 3 is equal to 4, x1 is equal to 4 plus 3, the x1 is 7। Now y1 plus 5 is equal to 6, y1 is equal to 6 minus 5, y1 is equal to 1। ठीक, हुण साडा P पॉइंट निकल आया। P पॉइंट की सी x1, that is 7 and 1। Now again B is midpoint of AQ। मैथड ड्रॉ कर लेनी इजी रहे। A पॉइंट की सी 2 3, B एदा मिड पॉइंट है -3 and 5, ते Q असी फाइंड आउट करना है। Q नू मैं x2 y2 ले लिया, लेट Q x2 y2। नाउ मिड पॉइंट फार्मूला बाय
सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला। ये तुहाडे ते तुसी प्रेजेंटेशन किवें करनी, वो भी प्रेजेंटेशन मैं कीती, ए भी मैं। तुहानू जेड़ी अच्छी लगदी यू हैव टू अडैप्ट दैट। अखां बंद करके नकल नहीं मारनी हुंदी, समझना हुंदा, ठीक है। मैं सीधा लिख भी सकदी हां, मैं बोल क्यों रही हां कि तुहानू कंसैप्ट क्लीयर हो। ठीक बच्चे, ठीक है। हुण आ गया मिड पॉइंट किवें कड्डी दा, 2 प्लस ए प्लस x2 ओवर 2 ते सेंटर वाला पॉइंट, फिर 3 प्लस y2 ओवर 2 सेंटर वाला पॉइंट। This is 2 plus x2 is equal to minus 6, x2 is equal to minus 6 minus 2, x2 is equal to minus 8. This is 3 plus y2 is equal to 10, y2 is equal to 10 minus 3, y2 is equal to 7. That means point जेड़ा q है वो ताड़े को क्या आ गया minus 8 है 7. This is ये साढ़े आंसर आए। ओके जी, क्वेश्चन च की सी, सिंपल गल सी, एक ए बी सैगमेंट है, इनू दोनों पासे वधाया, इधर भी ते उधर भी, ते सेम इंक्रीज किया है। सेम इंक्रीज करन करके जो सेंटर वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट बनता गया, मिड पॉइंट सैक्शन फार्मूला लगा के आंसर आ गया। ठीक है, इन्हें सारे सम चो यो ही मैनू इंपॉर्टेंट लग्या सी, इसे करके मैनू ये करवाने पे। ठीक है, ओके बेटा, हुणे तुहाडी कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके बच्चे।